Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student from IIT Kanpur. So today I'm going to solve the chapter Conic section with you all. So Conic section basically deals with circles, parabola, hyperbola and ellipse type of things like we have studied lines earlier. So here we come further. Conic section, why we call it conic section? Because when we take a plane and intersect it with a cone, then we get certain types of shapes. And that certain types of shapes are only circles, ellipse, hyperbola, parabola, etc. So the geometry of these shapes only we try to study in conic section. So this is only the brief introduction. So let's start. One more thing, in conic section, we take double-sided cone, means cone both the sides. And when we cut this thing, we get hyperbola, ellipse, circle, and parabola. So from here, we can see that when we cut it this way, we are getting ellipse. This way, we are getting parabola. This way, we are getting hyperbola. So this is just the way to cut the cone. When we cut the cone in different ways, we get different shapes. So now let's start with the circle first. So this is our exercise 10.1. Let's start. The first question, what we have asked, we have to find the equation of circle, and we have given the center and radius. So there are 4 parts. Let me start with the very first one. What is given to us? We have been given the center. Center is given to us is 0, 2. Center is 0, 2. Okay. Zero, 2. And we have been given the radius as 2. So we have to calculate the equation of the circle. No. Okay. So what we'll do, let me take the text box. Okay. So center 0, 2 and radius given to us 2. Radius is equal to 2. Okay. So now we have to calculate the equation of circle. So we know the general form of equation of the circle. What is general form of equation? General form of equation of circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square. This is the general form of equation of circle. Everybody must be knowing this thing. So what we have to do, we have to just find h, k, and r, and we are given h, k, and r. What is h, comma k? H, comma k is known as the center of the circle, and r is the radius of the circle. So h is given to us as 0, k is given to us as 2, and r is given to us as 2 also. So we have got our answer. So our final answer would be x minus h. H is 0 only, so it would be x square plus y minus k square. What is k? K is 2. So y minus 2 square equal to r square. What is r? R is also 2. 2 square is 4. So this is our final answer to this question. So the equation of circle is x square plus y square minus 2 equal to 4. Okay. So I hope you understood this thing. So let's move forward to question number 2. Question number 2 is the same thing. Actually, 3 and 4 are also same. So let me do the fifth part because this is slightly different one. Lest we have to calculate the equation of circle only. So let me do the fifth part. In fifth part also, we have to calculate the equation of circle only. So fifth part. Okay. So let me first copy the same equation over here because the equation of circle will remain same. That is x minus h square plus y minus k square equal to r square. This is the equation of circle and this will remain same. So let me do this. So this is the equation of circle, and now we have been given the center and the radius. So we have to calculate the equation. This is just the calculation based question, and the rest we have to do the same. जैसे अपन ने ऊपर किया वैसे अपने को यहाँ पे भी करना है, बस इसमें थोड़ी calculation बढ़ जाएगी, ठीक है?
तो अपन करते हैं इसको. Okay, so it would be x minus h. What is h here? H is given to us as minus a. So minus of minus a is plus a. So x minus minus a is plus a. So let me do it plus a square plus y. Again, it is minus b. So minus minus b is plus b. So y plus b square. So this is the right side part of the equation equal to r square. What is r? R is given to us as root of a square minus b square. So square of root of a square minus b square is a square minus b square. So a square minus b square. So if I would open this and solve this, so let me open this and solve. So after opening this, I will get what? I will get x square plus y square, x square plus y square. From here, I will get 2ax plus 2ax plus similarly, I will get 2ay, 2by plus a square minus b square. So b square will get 2b square and a square will get cancelled. So plus 2b square equal to 0. 2b square, sorry, 2b square equal to 0. So this is our final answer to this question. ठीक है, समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं किया मैंने, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, फिर उसमें एच के और आर की वैल्यू डाली है मैंने बस. ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं. इसमें अपने को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? इसमें अपने को दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है और अपने को रेडियस बताना है और सेंटर बताना है सर्कल का. ठीक है, सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Okay. So we have given x plus y 5 square plus y minus 3 square equal to 36. So I have written the general form of equation. So let me copy it again. So this is the general form of equation of circle. Now what we have to do, we have to compare the general form with the form given in the question. Okay. So let me do that. We have given x plus 5. So we have to compare x plus 5 with x minus h. So comparing x plus 5 with x minus h, what is our h? H is equal to minus 5. Why? Because minus of minus 5 is plus 5. So x minus h की जगह अपने को x plus 5 दिया हुआ है, so अपना h हो गया minus 5. Similarly, अपना k क्या हो जाएगा? Y minus k square होता है, and here it is given as y minus 3 square. So k is equal to 3. Okay. So we have calculated the value of h, we have calculated the value of k, now we have to calculate the value of r. So we have given that r square is equal to 36. Okay, so from here everybody can see that the value of r is equal to 6. So we have calculated the h, we have calculated k, and we have also calculated the radius. So we have calculated the center and radius of circle. So let me write it. Center is equal to h comma k. H is minus 5, k is 3. So minus 5 comma 3. This is our center. Okay. And what is the radius? Radius is equal to 6. Okay. So we have done the question number 6. So let's move forward. Let's move to question number 8 because 7 and 8 are also the same thing. If I will do question number 8, then question number 7 is already done. So let me do the 8th one. So what's been asked in the 8th question? We have been given the equation of circle. Let me copy it down. Okay. Something would happen. 1 second. Let me write it only. X square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0. Minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0. Okay. So this is my equation.
Now I have to calculate the center and radius now. So firstly, what we have to do, we have to combine these terms and write it in the form of perfect square, so that we can write this equation in the form of this thing. So I have to write this equation in this form. Again, see, we have to use this equation in every question. So this equation must be memorized by you anyhow. Okay. So let's move forward. We have to write this thing in this form now. So x square minus 8x. We know that 8x is 2 times 4x. So it is actually x minus 4 whole square. X minus 4 whole square. How? Because x, when you will open that, you will get x square minus 8x plus 16. And we already have in the question x square minus 8x. So all this part is correct. So now let's move to y part. What we have to do in y? 1 second. Okay. So y, and we have got y square plus 10y. So we have to do plus here foremost. And since we have got 10y, we know that we used to do 2ab. So this thing is 2 into 5y. So it would be y plus 5 square. Okay. So from here we are getting minus 16, and from here we are getting plus 25. So minus 16 plus 25 is plus 9. And we want what? We want minus 12. So what we have to do, we have to do, we have minus 9, we have plus 9, and we want minus 12. Okay. So I think minus 16, 12 will go that side, and it will be equal to 12. So I will get equal to 12. And what was left? I was left with plus 9 plus 25. To 25 plus 9 is 16 plus 25. 35, 35, 41. 41, okay. So 41, and I will get plus 41. No, I will get plus 41. So to counter, I need minus 41. So it will go that side. It will be 12 plus 41. Okay. It is just calculation. You can do it. I actually got a little confused in plus minus. So sorry for that. So it will be 12 plus 41 and equal to 53. Okay. So this is our equation in the correct format. So now from here we can easily see that our center of circle is equal to 4 comma minus 5, and radius is nothing but equal to root 53. Okay, root 53. Root 53. Okay. So we have done question number 8 also. In the similar way, you can do question number 7. So let's move to next question number 10. Question number 10. Okay. So what has been asked? Find the equation of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5, and whose center is on the line 4x plus y equal to 16. Okay. So again, let me write the same equation. Since see, you have to write this equation in every question, so better you should learn it. And now just put the values. We have been given the circle is passing through 4, 1 and 6, 5. So let me again copy this equation and right here, just replace x with the value of x. X is given to us as 4 and y is given to us as 1. Okay. And again, writing the same equation, just replacing x with second point means 6, 5. So 6 and 5. So we have got 2 equations, but we have 3 variables, h, k, and r. So we want one more equation. One more equation is given to us as center is lying on 4x plus y equal to 16. Since अपने को पता है कि अपना सेंटर h, k है, तो अपन इसमें x, y को h, k से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. तो अपना इसमें क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा
4h plus k equal to 16. Okay, so we have three questions, we have three variables, we can easily solve this and get to our answer. So let me do that. Let me do that. Opening the first question, I will get 16 plus h square. I'm not taking that sign. Plus k square plus 1 minus 8h minus 2k equal to r square. Okay, equal to r square. Similarly, when I will open second equation, I will get 36 plus h square plus k square, 36 plus h square plus k square plus 25 minus 12h minus 10k minus 12h minus 10k equal to r square. Okay, so now we have three equations, three variables. We can easily solve this, and on solving this, I will get, just have to solve these three equations because we have three variables and three equations. You can easily solve this. After solving this, we will get r equal to root 10, r equal to root 10. Okay, and we will get h comma k as 3 comma 4, h equal to 3 and k equal to 4. So we have calculated the value of h, we have calculated the value of k, we have calculated the value of r. So we can easily write the equation of circle. We have to just replace h with 3, k with 4, and r square with square root of root 10, which is 10. So this is our final answer to this question. X minus 3 square plus y minus 4 square equal to 10. What we have to do, we have to just find three equations. Why? Because in the general equation of circle, we have been given three variables, h, k, and r. So we have to find three equations in h, k, and r, and then we have to solve them to get the value of h, k, and r, and then we can easily write the equation of circle. Okay, I hope you understood that. So let's move ahead. Let's move ahead. To question number 11. What are they saying? What are they saying? They are saying find the equation of circle passing through the points 2, 3 and minus 1, 1 and whose center is on the line this. Let me leave this question because this is again the same question. Just they have changed the values. What they have said instead of 4, 1, they have taken 2, 3. Instead of 6, 5, they have taken minus 1, 1. And on the equation 4x plus y equal to 16, they have taken x minus 3y equal to 11. So it is the same question as question number 10. So if you have understood question number 10, you can easily do question number 11. So let me move ahead with question number 12. Question number 12. Question number 12 में क्या कहा गया है? Find the equation of circle with radius 5. इसमें अपने को रेडियस दिया हुआ है and whose center lies on x axis. अपने को दिया हुआ है center lies on x axis. So सबसे पहले अपन नीचे लिखते हैं. Center lies on x axis. See, इस वाले इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में अपने को कुछ भी करके तीन क्वेश्चन आने के लिए डायरेक्शन दिए होते हैं. अपने को उन तीन क्वेश्चन से अपने को वो तीन इक्वेशन निकालनी पड़ती है उस डायरेक्शन से, जैसे कि अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सके. सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस का आपको इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे अपने को ये समझ में आता है कि जो अपना सेंटर है वो समथिंग सम x, 0 के फॉर्म में होगा, क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट में y वेरिएबल 0 होता है. इसका मतलब इससे अपने को क्या बदलता है कि मेरा h, k में k 0 है, तो मेरा जो सेंटर है उसके लिए k 0 है. तो अपने पास एक वेरिएबल तो ऐसे ही कम हो गया, क्योंकि अपने को सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है. इससे अपने को समझ में आ गया कि मेरा y वाला पॉइंट तो 0 है, तो k इक्वल टू 0 तो अपने आप हो गया. ठीक है, और फिर मेरे को दिया हुआ रेडियस 5 है. तो सब इसमें तो अपने आपको सब कुछ दिया हुआ है. इसमें अपने को रेडियस भी दिया हुआ है कि रेडियस इक्वल टू 5. अपने को क्या निकालना बचा है? अपन ने k निकाल लिया, अपन रेडियस अपने को दोनों, अपन ने बेसिकली कुछ नहीं निकाला इसमें. अपने को बचा h निकालना है. h निकालने के लिए अपन क्या करें? अपने को दिया हुआ है कि अपना जो सर्कल है वो 2, 3 से पास होता है, तो अपने को बस इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब वैल्यूज रखनी है. इससे अपने को h की वैल्यू भी मिल जाएगी.
ठीक है. So again I will do the same thing because it is damn simple actually. You have to just put down the values and you can easily reach to your answer. So your x is given to us as 2 minus h you have to calculate square plus y is given to us as 0 square. So let me write it directly, equal to 9 equal to r square. R, what is r? R is 5. So r square is 25. Okay. So we have done this thing. And from here, we can easily see that the value of h comes out to be plus minus. Actually, we will get the value of h is 25 minus 9, 16. So I will get as root 16. Root 16 is plus minus 4. So if I will do this way, I will get 2 minus h equal to plus 4 and 2 minus h equal to minus 4. I will get two answers, no, because when we solve in the root, we get plus minus. So from here, what I will get h equal to 2 minus 4, which is nothing but minus 2, and h equal to 2 plus 4, which is 6. So I will get the value of h is 2 and 6. So from here, we can easily see that we are getting two equations of circle. What we are getting two equations of circle. Let me write it down for you. This is our general equation. We have to replace firstly h with minus 2. So minus of minus 2 is plus 2. So plus 2 and k तो 0 ये दोनों केसेस में. तो अपने को k को तो 0 ही करना है तो इसको तो हटा दो. और r क्या अपना r है 5. तो r square is 25 only. So this is our first equation. And what is our second equation? Our second equation is same equation, just we have to replace here h with 6. Okay. And k तो अपना 0 ही अपन ने निकाला था. तो k को 0 कर देते हैं और r स्क्वायर 25 है. तो इस केस में अपने को दो इक्वेशन मिलेगी. ठीक है. सो अगर मैं इसको सर्कल करूं तो ये मेरा आंसर है. ठीक है. तो ये मेरा आंसर है. अब अपन आगे चलते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन सिंपल है, बस आपने को कैसे भी करके एच के और आर की वैल्यू निकालनी है. मैं बार बार आपसे वही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को सिर्फ हर बार एच के और आर की वैल्यू निकालनी है और अपने को कुछ भी नहीं करना है. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 13. ओके. सो व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड हियर. इसमें अपने से क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 13 में मुझसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0. एक पॉइंट दिया हुआ है 0,0. तो वापस अपन x, y की जगह 0,0 डाल देंगे. तो जो सिंपल अपन ये लिख लेते हैं h स्क्वायर. अपने को क्या मिलेगा. अपन x को 0 डालेंगे तो अपने को h स्क्वायर मिलेगा. प्लस y को 0 डालेंगे तो अपने को k स्क्वायर मिलेगा. तो प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है. सो इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई सिंपल सी. फिर अपने को क्या दिया हुआ है मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा. ओके. सो अपने को बोला गया कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी के इंटरसेप्ट मिलाते हैं. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब जो अपना सर्कल है मैं आपको बना के दिखाता हूँ. चलो. इसमें लाइन का ऑप्शन है नहीं क्या. ओके. सो लेट मी मेक इट. let this be your x-axis, y-axis, and let this be your x-axis. Okay. So let me draw the circle. Okay. So since we are given that circle passes through 0,0, so my circle should pass through here. Okay. ठीक है. तो ये मेरा सर्कल होगा. अब देखो इसमें क्या बोला गया है. इसमें बोला गया है कि जो मेरा सर्कल है वो इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. सो ये अपना ए और बी का बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब जो मेरा सर्कल है वो पास हो रहा है a,0 और 0,b से. मतलब जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला मैं पेन पे आता हूँ. जो मेरा ये वाला पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a,0. लिख सकता हूँ a,
0। ये मेरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और सिमिलरली जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0,b, ठीक है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया, a,0 तो यहाँ पे होगा ना, 0,b वहाँ पे होगा, तो ये होगा अपना a,0 और ये होगा अपना b,0,b, क्योंकि y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे x एक्सिस वाला 0 होगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे होगा अपना b,0, 0,b, 0,b, ठीक है। समझ में आया ना इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि जो अपनी ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये लेंथ a है, और जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये है b। तो अपने को इससे क्या बदल गया? अपने को इससे बदल गया कि अपना सर्कल जो 3 पॉइंट से पास करता है, 0,0, a,0 एंड 0,b। अब देखो अपने को पता होती है सर्कल की एक प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी सर्कल कहीं पे 90, अपने को पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, दो एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अपने को पता है कोई भी सर्कल अगर अपने, जो अपना सर्कल है उसके एज पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो वो जिन दो पॉइंट सबटेंड कर रहा होता है वो डायमीटर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, और जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है ये सर्कल के डायमीटर के एंड्स हैं। सो बेसिकली जो मेरा ये जो लाइन होगी, ये सर्कल का डायमीटर होगा। सर्कल का डायमीटर है तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो सेंटर होगा वो मेरे सर्कल का सेंटर होगा। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर हो जाएगा a,2, b/2, a/2, b/2। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जो मेरा 90 डिग्री बना रहा है सर्कल पे, इसका मतलब जो मेरा सर्कल पे दो पॉइंट्स होंगे वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, कि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो उनका जो सेंटर होगा वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो सर्कल का सेंटर निकाल लिया, कैसे निकाला? 0 + a/2, b + 0/2। तो उसमें सर्कल का सेंटर आ गया a/2, b/2। और मेरा सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? ये डायमीटर है तो डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी? टेक्स्ट बॉक्स पर वापस चलते हैं। हम्म, एक मिनट। ठीक है, तो हाँ, तो मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा मेरा इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √(a - 0)² प्लस √(b - 0)²। तो मेरा डायमीटर हो जाएगा a² प्लस b² का अंडर रूट। ये तो हो जाएगा मेरा डायमीटर, ठीक है। अब मेरे को रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या करूंगा? मैं इसका हाफ कर दूंगा। सो रेडियस इज इक्वल टू सेम थिंग, बस इसका हाफ हो जाएगा। क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा बस। सो दिस होल थिंग डिवाइड बाय 2। सो ये मेरा रेडियस है, ठीक है। तो मैंने सेंटर निकाल लिया, मैंने रेडियस निकाल लिया। अपने को क्या चाहिए? अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो अपने आराम से लिख देते इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे? मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी वही अपनी फेमस x - a/2 का स्क्वायर प्लस y - b/2 का स्क्वायर इक्वल टू r²। मेरा आर क्या है? मेरा आर है ये, तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार तो आर को लिख दे रहा हूँ। समझ में आ गया ना? मैंने आर भी निकाल लिया, मैंने एच भी निकाल लिया, मैंने के भी निकाल लिया। बस आर, एच और के निकालने के बाद मेरे को उनकी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करनी है, और इक्वेशन में पुट करके मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन तो देखो सिंपल होते हैं, बस अपने को सॉल्व करना होता है इनको, ठीक है। सो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा आराम से आर की वैल्यू डाल के, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप सो।
क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है इसमें? सब में अलग एक चीज बोली जाती है, लेकिन हमने पढ़ना सब में सेम ही रहता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। सो अपने को सेंटर पता है, अपने को सर्कल का एक पॉइंट पता है, तो अपन रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि सेंटर से रेडियस, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन लोग लाइन जोड़ते हैं तो वो जो लाइन होती है वो रेडियस होती है सर्कल की। सर्कल का रेडियस अपन आराम से निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो अपने को फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट। सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 का अंडर रूट। एक मिनट में बनाता हूँ। 4 प्लस 9 का अंडर रूट मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रेडियस। तो मैंने रेडियस निकाल लिया। अब मेरे को क्या दिया हुआ है? और मेरे को दिया हुआ है कि अब मेरे को एक क्वेश्चन सर्कल निकालनी है ना, सिंपल, मेरा आंसर सॉल्व हो गया। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। देखो मेरे को रेडियस निकाल लिया, अब मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है, तो मैं वही लिखता हूँ, एक्स माइनस एच। एच मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटर 0,0 ही है, नहीं 2,2 है, तो एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर अपना रूट 13, तो रूट 13 हो जाएगा 13, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था अपने को। अपने को क्या दिया था इस क्वेश्चन में, सुनो। अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अपने को आर की वैल्यू दी हुई थी, अपने को आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी, अपने को दिया हुआ था कि सर्कल का सेंटर क्या है और सर्कल का एक पॉइंट दिया हुआ था। तो अपने को ये चीज पता होती है कि अगर अपन सर्कल के सेंटर से उसके किसी पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस लिखेंगे, तो वो अपना रेडियस होता है, ये अपने को पता होता है। तो अपन ने पहले रेडियस निकाला हुआ फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला लगा के, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। वहां से मेरे पास रेडियस आ गया, मेरे को सेंटर दिया हुआ था, फिर मैंने क्वेश्चन ऑफ सर्कल में सब वैल्यू डाली और अपने को फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो वी कैन इजीली कंप्लीट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या बोल रहा है, डज द पॉइंट दिस थिंग लाइज इनसाइड आउटर और ऑन द सर्कल। ओके, सो इसमें मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, इसकी थ्योरी होती क्या है। इसमें थ्योरी ये होती है कि जो अपने कोई क्वेश्चन ऑफ सर्कल दी है, अपन उसमें जो अपने को पॉइंट्स दिया हुआ है वो पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद अपन, या फिर उसकी उतनी भी जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन से आप सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसमें अपने को पता है एच और के अपना दोनों जीरो है, तो इसका मतलब अपना सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0,0। तो अपन क्या करेंगे, अपन -2.5, 3.5 और 0,0 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम आती है तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आती है तो वो सर्कल पे लाई करेगा, और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आती है तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अपने को जो पॉइंट दिया होता है उसको अपने को सर्कल की क्वेश्चन, सर्कल का सेंटर से सर्कल की क्वेश्चन सेंटर निकालना होता है, और सेंटर और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आती है तो वो सर्कल पर लाई करेगा, कम होती है तो अंदर, और ज्यादा होती है तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। सो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। सो पहले तो मैं लिखता हूँ अपना सेंटर यहाँ पे हो जाएगा 0,0, सेंटर इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। फिर मेरे को पॉइंट दिया हुआ है, मेरे को पॉइंट दिया हुआ है -2.5, 3.5, -2.5, 3.5, ये मेरे को पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को बस डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच की। सो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू 2.5 स्क्वायर मतलब 6.25, क्योंकि 2.5 माइनस 0 2.5 होगा, 6.5 माइनस 0 में 3.5 होगा, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। सो बेसिकली इसका अंडर रूट होगा मेरा आंसर।
मतलब मेरे डिस्टेंस, आंसर तो नहीं, डिस्टेंस। सो इसका अंडर रूट, ओके, अंडर रूट बनाना पड़ेगा इससे। सो इसका अंडर रूट में आंसर होगा, सो ठीक है। सो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6.25 प्लस 2.25, इसका अंडर रूट आएगा समथिंग अराउंड 4.3, लेकिन ये प्रॉक्स होगा, ठीक है। सो देखो मेरा सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस में क्वेश्चन देख रहा हूँ 25 है, तो आर स्क्वायर इक्वल 25, मतलब आर मेरा 5 है, 5 से कम। तो क्योंकि 4.3 is less than 5, so we can say that the point lies inside the circle, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है अपने को, बस उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से। अगर वो डिस्टेंस कम आती है रेडियस से, तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाया करेगा, बराबर आती है तो सर्कल पे लाया करेगा, ज्यादा आती है तो वो सर्कल के बाहर लाया करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ये वाली एक्सरसाइज अपन ने कर ली है। कुछ नहीं करना था अपने को, एक बेसिक सी इक्वेशन पकड़नी थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और उस इक्वेशन को पकड़ के सॉल्व करना था। हर इक्वेशन में अपने को एच की और आर की वैल्यू निकालनी थी, और पहले वाले कुछ क्वेश्चन अपने इक्वेशन सर्कल निकाली, उसके लिए भी अपन ने x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को यूज किया, क्योंकि वही अपनी जनरल इक्वेशन है। तो अपने को हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को जनरल इक्वेशन लिखनी है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।